for this unique event called HomeoBliss 2019. And has honored us by their presence. Thank you all for being with us today. Myself, Dr. Abhishek Singla, feels an esteemed pleasure to welcome you all to our beautiful journey. This journey is going to be started today with the game of mind and intellect via an inter-college homeopathic quiz contest, which is organized by the Excel Academy of Homeopathy, sponsored by Excel Pharma. Before starting with the proceedings of quiz, I would personally like to acknowledge and recognize the presence of respected Dr. Ravinder Kochhar Sirji, Principal Lord Mahavira Homeopathic Medical College and Hospital, Ludhiana, who has stood by us and has guided us in our every step towards today's event. We thank you, sir, from the core of our hearts. Next, we have amongst us Dr. Sandeep Puri, Principal, Homeopathic Medical College and Hospital, Chandigarh. We welcome and recognize your presence, sir. Now I would request and call upon Dr. Anukant Goyal to give us a brief introduction about Excel Academy of Homeopathy and his vision behind HomeoBliss 2019. Dr. Anukant. रिसर्च करें, जो कुछ भी चल रहा है वो सब यही है कि भी स्टूडेंट्स आते हैं, पढ़ते हैं और क्लिनिक में चले जाते हैं, लेकिन रिसर्च वर्क जो सचमुच में है वो नहीं हो रहा। तो यही इंसिस्ट किया था मुझे दिल्ली से डॉक्टर मान सिंह ने, तब वो सीएम और सीजीएचएस थे। इन दोनों लोगों से इंस्टिगेट होके फिर मैंने अपने आसपास जो हमारे लाइक माइंडेड दोस्त हैं उनसे बातचीत शुरू की, और मैं थैंकफुल हूँ डॉक्टर अभिषेक सिंगला, डॉक्टर परमिंदर कौन, डॉक्टर संजय, डॉक्टर राजेश महाजन जंडियाला से जो भी पहुँचे हैं, इन सबके साथ मिलके फिर हमने ये शुरू किया। लेकिन जो एक चीज़ जिसको अब आज हम मिस कर रहे हैं वो है डॉक्टर अब्दुल हमीद। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने भी हमें एक्सेल एकेडमी शुरू करने में बहुत हेल्प की थी। और अब हम यहाँ कर क्या रहे हैं, ब्रीफ सा मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि भी ये जो होम्योब्लिस किया है इसके पीछे हमारा पर्पस क्या है। आज की डेट में आप सबको पता है कि भी क्वेश्चंस उठते हैं होम्योपैथी काम कैसे करती है। हम सेमिनार्स पे जाते हैं, वहाँ बड़े बड़े केस देखते हैं कि भी ऑटिज्म भी ठीक हो रहा है, कैंसर भी ठीक हो रहा है, एड्स भी ठीक हो रहा है, लेकिन रिकॉग्निशन नहीं है। तो कहीं तो कमी है हम लोगों में। वो रिकॉग्निशन अब कब होगी? जो 5 साल का प्रैक्टिशनर है या जिसको 10 साल हो गए उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। रिकॉग्निशन करवानी है आप लोगों ने जो स्टूडेंट्स हैं, क्यों जब आप पास आउट हो गए और यहीं से एक रिसर्च का मोटिव लेके चलोगे तब रिसर्च होगी। अब छोटा सा एग्जांपल, हम एक्सेल एकेडमी में क्या कर रहे हैं, कोशिश क्या है? कोशिश ये है, जैसे हम सबको पता है नक्सवामी का सभी जानते हैं, इनके सिम्टम्स सभी जानते हैं। कॉमन नेम प्रूव्ड बाय हनीमैन ये है। इसका जो सिनोनिम्स हैं हिंदी में क्या कहा जाता है, लोगिनेसी फैमिली। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमने कभी नहीं पढ़े कि इसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, नक्सवामी का काम कैसे करती है। हमारे जो लिटरेचर है हनीमैन ने कहाँ से लिया, उसने भी पुरानी रीडिंग से, पुराने पॉइजनिंग से ही सिम्टम्स को उठाया, फिर प्रूविंग की। जब हम केमिकल एनालिसिस करेंगे तो ये सारे नक्सवामिका के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। उसके बाद ये एक्शन क्या करती है, हम प्रूविंग्स करते हैं, प्रूविंग में सिम्टम्स कहाँ से आते हैं, क्यों आते हैं? कभी हमने ये सोचा? कभी आपने अपने मटेरिया के टीचर से या अपने फार्मेसी के टीचर से पूछा? जब आप ड्रग प्रूविंग करेंगे कभी ऑर्गेनॉन के टीचर से पूछा कि ये क्यों हो रहा है? जो हम गाइडलाइंस देखते हैं ऑर्गेनॉन में, ये गाइडलाइंस है, पर सिम्टम्स आए कहाँ से? जैसे नक्सवामिका है, नक्सवामिका का काम हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर है, इनहिबिटरी है, न्यूरोटॉक्सिन है। फटाफट जैसे ही हुए नर्व्स कोई एंडिंग्स पे एक्ट करेगा, काम खत्म। वहीं से सारे सिम्टम्स आए। वो क्यों आए? क्योंकि जो इसके एल्कलॉइड्स है, ये हमारा सिनेप्स है जो एक नर्व एंडिंग दूसरी नर्व एंडिंग को सप्लाई कर रही है। जो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो क्या करते हैं,
वो मिलते हैं, उनका स्ट्रक्चर सेम है एज ग्लाइसिन, जो हमारी बॉडी में नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन को बैलेंस करता है पॉजिटिव के साथ। जो एल्कलॉइड्स हैं नक्स वोमिका के, वो ग्लाइसिन को रिप्लेस करके अपनी बाइंडिंग यहाँ कर देंगे। अगर यहाँ ग्लाइसिन की बाइंडिंग होगी तो नॉर्मल फंक्शन होगा, जब उसकी बाइंडिंग नहीं होगी, स्टिचिनिन की हो जाएगी या ब्रूसिन की होगी, तो नेगेटिव आयंस बंद हो जाएंगे, पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। Event, that is inter-college homeopathic quiz contest, and here we have amongst us teams from 5 different homeopathic colleges across Punjab, Himachal, Haryana and Chandigarh. The participant colleges are Lord Mahavira Homeopathic Medical College and Hospital, Ludhiana, Punjab; Shri Guru Nanak Dev Homeopathic Medical College and Hospital, Ludhiana, Punjab; Homeopathic Medical College and Hospital, Chandigarh; J.R. Kisan Homeopathic Medical College and Hospital, Rohtak, Haryana; and Homeopathic Medical College and Hospital, Solan, Himachal Pradesh. Huge round of applause for Team Excel. Now I'll request participants to introduce yourself in brief, one by one. Dr. Pontu, do the courtesy, please. Hello everybody. Good morning. I'm Harshdeep Kaur from Homeopathic Medical College and Hospital, Chandigarh. I'm from 4th Prof. Good morning everybody. My name is Vanchika and I'm from Homeopathic Medical College, Chandigarh. I'm an intern. Good morning everyone. I'm Shivani Sharma. I'm in 4th Pro. I'm from Homeopathic Medical College, Chandigarh. Team second, Lord Mahavira Homeopathic Medical College. Good morning all. I'm Vidhima. I'm intern at Lord Mahavira Homeopathic Medical College. Hello everybody. Good morning. I am Delsi Kalra from 4th Pro of Lord Mahavira. Good morning everyone. I am Divya from 3rd Pro of Lord Mahavira. Team 3, Guru Nanak Dev Homeopathic Medical. Good morning everyone. My name is Manan Verma and I am from Guru Nanak Medical College. A very good morning everyone. I am Manvi Sharma and I am from SGND. Good morning everyone. Myself Kiranjit Kaur and I am from SGND College. Good morning everyone. My name is Soumya Singh and I'm from Solan Homeopathic Medical College, 4th Prof. Hello everyone, good morning. I am Shrikirti Haritesh. I am from Solan Homeopathic Medical College and I am intern. Good morning to one and all. My name is Sheetal Rana and I'm from 4th Prof. From JRK Medical College and Hospital, Rohtak, and I am from 4th Pro. Good morning everyone. My name is Surya Sharma. I am from J.R. Kisan Homeopathic Medical College. I am in 4th Pro. Good morning everyone. My name is Archit and I am from J.R. Kisan Homeopathic Medical College and an intern. Good morning everyone. Myself Kunal Garg. I am from Shri Guru Nanak Dev Homeopathic Medical College. I am in 4th year. Good morning everyone. My name is Akshit Sharma and I am from SGND, from 1st Prof. Good morning everyone. I am Riya Kathuria from 3rd Prof from SGN. Good morning everyone. I am Anila from LMH, intern. Good morning everyone, myself Kunal Teja from 4th Pro. Good morning everyone, my name is Yamini and I am from Lord Mahavira. Good morning, my name is Shweta Goyal. I am from Homeopathic Medical College and Hospital, Chandigarh. I am an intern. Good morning everyone, my name is Chirag. I am from Homeopathic Medical College, 26 Chandigarh and I am home. Good morning everyone, my name is Parth and I am from HMCS Chandigarh and I am from 4th Pro. Good morning everyone, my name is Gurmeet, JRK Homeopathic Medical College, Rohtak, Haryana, and I am 4th Pro. Good morning everyone, I am Bhavna from JRK and intern. Good morning everyone. I am Anju from JRK Rohtak, Haryana, and I am in 4th Pro. Thank you participants and all the very best to all the teams. Kindly confirm one thing, am I audible clearly and the screen visible to each and every person? Is it fine? Yes, sir. So here we proceed with the quiz now. So round 1. I'll be explaining the rules as we proceed with the quiz. So in this round, each team will be asked one individual question with 4 options and you will have to answer the correct option. Out of 4 options, right? It is allowed. You can discuss yourself before answering. Each correct answer will fetch you 20 marks and in case of incorrect answer,
the question passes to the next team for 10 marks. The individual team for whose question is designated will be having 15 seconds to answer the correct question. And your time will start as soon as the options are displayed over the screen, right? The next team will get, in case of the question passes, 10 seconds to answer, and that will fetch you 10 marks. Even if still the question gets unanswered or incorrect, the question passes to team C, and they will be having 5 seconds only to answer, and they will be having 5 marks for the correct answer. Right? Is that clear to all? We have amongst us as scorer Dr. Amita Goel. She'll be scoring your marks for each question answer. And on timer we have Dr. Mansi and Dr. Pallavi. Is the timer audible? Kindly press the timer once. Is that audible? Yes, sir. So shall we start? Ready? The question first. Sir. Options are already displayed. Thoracoacromial artery. You have to answer, please. You will be having 15 seconds only. Team 2, question 1. Erb's paralysis causes weakness of all the muscles except supraspinatus, biceps brachii, deltoid, triceps brachii. 15 seconds, please. A. Supraspinatus. Wrong. Question passes to team 3. Wrong. Question passes to team 2nd. D. Triceps brachii. Sorry? D. Triceps brachii. Yeah. Right answer. She gets 5 marks. Round 1, question 1, team 6, your individual question. Regarding spinal, which one is a false statement? It ends in adults at lower border of L1. B. Grey matter occupies its central part. C. Spinal cord is covered by 3 meninges. D. It shows thoracic and lumbar enlargement. Wrong. Question passes to team 7. Wrong again. Question passes to team 8. It shows thoracic and Right. They get 5 marks for this. Round 1, question 1, team 7. Your question. Which of the following make lateral boundaries of the femoral triangle? A. Inguinal ligament. B. Medial border of sartorius. C. Adductor longus. D. Pectineus. Yeah, right. They get 20 marks for that. Question 1, team 8. Which bone is devoid of muscle attachments? A. Talus. B. Cuboid. C. Navicular. D. Patella. Wrong. Question passes to next team. Navicular. Wrong. Question comes to you. Again question comes to me. Do I need to answer again? It's A. Talus. So team 1 gets... No, team 9 is left, right. Question 1, round 1, team 9, your individual questions. Blood supply of liver is A. 80% arterial, 20% venous. B. 70% arterial, 30% venous. C. 20% arterial, 80% venous. And D. 60% arterial, 40% venous. 80% arterial, 20% venous. Wrong. Question comes to you. C. Right answer. You get 10 marks for this. Now you are getting the supplementary question because first question got disturbed, right? Which of the following apertures lies in the central tendon of diaphragm? A. Esophagus. B. Thoracic duct. C. Inferior vena cava. D. Abdominal aorta. (15 seconds, fast).
Inferior vena cava. Right. You get 20 marks for that. Do you want to know the marks till now? I am having the highest marks. Let the round complete. Any further query? We comes to the mid of the round 1. Any still query? Anyone want to ask? No worries, no worries. Be patient. Round 1, question 3, team 1, your individual question. Lumbar puncture is considered in the following cases: bacterial meningitis, brain disease, multiple sclerosis, syphilis. A. Bacterial. Wrong. Question goes to team 2. Brain diseases. B. Yes, they got 10 marks for that. Right answer. Round 1, question 3, team 5, your individual question. Continuous machinery murmur is heard in A. Arterial septal defect, B. Ventricular septal defect, C. Fallot tetralogy, D. Patent ductus arteriosus. 10 seconds. C. Papule, D. wheel. B. Vacuum. Right, they got 20 marks for that. Round 1, question 3, team 8, your individual question. Icterus is most marked in sclera because A. High content of collagen, B. High content of elastin, C. It is white, D. It is exposed. "15 seconds, you have to answer. High content of collagen. Wrong. Question passes to team 9. High content of elastin. B. B. Right. They got 10 marks for that. Give me the option and what is given in the option, both. Round 1, question 3, team 9, your individual question. Raised serum amylase levels are used to diagnose A. Autoimmune disease, B. Degenerative diseases, C. Acute cholecystitis, D. Acute pancreatitis. Quite easy. D. Acute pancreatitis. Right, you got 20 marks for that. Question for audience now. One question for audience now. Kindly don't prompt but raise hands to get the gift. Otherwise it comes to me as usual. The most common site of intestinal obstruction in gallstone ileus is A. duodenum, B. jejunum, C. ileum, D. sigmoid colon. Only one chance I'll give in the audience. Sir, duodenum. Sir, that's not the way. Wrong answer. Ma'am, please. Ileum. Again wrong. Yeah, right. Ileum you said. Yeah, right. एक मिनट यार, मैं भी हूँ. Please. Thank you. Are we going good? Are you people enjoying? So last round of round 1. Round 1, question 4, team 1, your individual question. Commonest site of peptic ulcer is first part of duodenum, second part of duodenum, distal 1/3 of the stomach, pylorus of the stomach. "15 seconds, come fast." B. Second part of it. Wrong. Question passes to team 2. D. Pylorus of stomach. Wrong. Question passes to team 3. C. Distal 1/3 of Question comes to me as usual. First part of duodenum is the right answer. Question for audience again. Kindly don't prompt, only raise your hands please. Burn associated ulcer is called Cushing's ulcer, Curling's ulcer, trophic ulcer, peptic ulcer. Dr. Sanjay, please, you raise the hand first. Cushing ulcer. Sorry? A. Cushing ulcer. Wrong, sir, wrong. Question comes to me. They want to answer? Go ahead, sir. Curlings. Right, sir, you got the right answer. Please, Dr. Dwivedi.
So here we come to the end of the round 1. I'll request the scorers to please announce the scores of individual teams. Team 1, 60 marks. Team 2, 55 marks. Team 3, 25 marks. Team 4, 65 marks. Team 5, 20. Team 6, 45. Team 7 is at present at the top, 105 marks. Great. Team belongs to Lord College. Great. And Team 8, 25 marks. Team 9, 30 marks. Right. All of you buck up, please. No need to worry, you have further rounds, you can catch up with the other teams, even if you are at the bottom right now. But concentrate further. This round is a rapid fire. Every team will be allotted 2 minutes, that is 120 seconds, and they will be asked questions to the maximum of 10, one by one. मतलब एक टीम को 2 मिनट मिल गए, उसके 10 के 10 क्वेश्चंस मैं एक साथ उन्हीं को पूछने वाला हूँ. Team can take as much time as they want to answer a question, or they can say pass if they don't want to answer that particular question and want a next question to come. If they don't know the answer or want to answer the question later, each question will fetch you 10 marks for each correct answer, and so you can earn 100 marks in this round, but within 2 minutes only. If the time is left, team can re-ask his unanswered or wrongly answered questions as well. No question passes to the next team. Is that clear? Which part is used for making medicine thuja? Incomplete answer. Leaves of Ayurveda. Incomplete answer still. Which part is used for making medicine aconite? You have 2 minutes in total. Wrong. Coagulation. Wrong. Fast, it's a rapid fire round. Chyluria is caused by? Has to strain at stool in order to urinate. You name the medicine. Elmina. Your time goes. Any queries? You can ask me rather than prompting within yourself. Which one is that? The time was passed. The bell. No. Kindly don't do it. The moment the bell rang, afterwards the answer came. Team 2, your rapid fire begins now. Which part is used for making medicine electris? Pass. Which part is used for making medicine euphrasia? Flowers. Sorry? Flowers. Wrong. Pass. In which form iron is stored in the body? Hemocytrin. Incomplete. Ferritin and hemocytrin. Very right, you got right. 10 marks for this. Ear lobule is made up of? Cartilage. Wrong. Incomplete, you are close. Right, I give you. Which part is used for making medicine rust ox? You will pass by the time. You got 4 answers right. Team 3, your rapid fire. Are you ready? Time starts now. Which part is used for making medicine collinsonia? Roots. Wrong. Pass. Which part is used for making medicine symphytum? Pass. Which part is used for making medicine eupatorium perf? Stem. Wrong. 120 seconds, come fast. Leaf. Sorry? Leaf. Wrong. Go ahead, you can go ahead with the time. You can, time has passed. Even if you don't know, go on speaking the other parts. Maybe you can get the correct answers.
Team 4, are you ready for your rapid fire? Your time starts now. Which part is used for making medicine alpha awaken to get breath? Name the medicine. Lephasis. Wrong. Which part is used for making medicine criticus? Second. No, wrong. Secondary support of uterus is faster. Application of medicinal knowledge to cure disease. Name the aphorisms. Application of medicinal knowledge to cure disease. Name the aphorisms. Faster. Wrong. It is a range. It is a medicinal plant, vegetable kingdom, not bone. What changes are made by silicia on bones? Mention the pathology. What changes are made by silicia on bones? Okay, incomplete, you are close. Operations and pus formation. Time goes by, darling. Medicine of Experience was written by Hahnemann in to the audience. Practitioners. As famous saying, Organon is the guidelines for practice, right? Not to the contestants right now. Mention the year in which it is written by Hahnemann. Medicine of Experience. No one? No one from the audience? Sir, you want to answer, sir? Haji? Please, sir, if you can kindly. No? Okay. Should I pass it on to contestants? You have answered once. Okay, Ridhima, you come. Right answer. आ जाओ रिधिमा. Dr. Amita, please. 120 सेकेंड है आपके पास, right? Your time starts now. Which part is used for making medicine Dalkamara? Leaf. Wrong. Faster. Stem. Wrong. Root. Wrong. Pass. Okay. Which part is used for making medicine Glyceria glabra? Leaves. Wrong. Whole plant. Wrong. Pass. Okay. Main store of copper in the body is, name the organ. Main store of copper in the body is, name the organ. Liver. Yes. Quinsy is what? Name the pathology. Quinsy is Tonsillitis की pre-stage. not pre, Post. not post written in my paper. Advanced. It's a complication. It's a complication of the. Complication of tonsillitis. That is, but that is not what I have written in my paper. Pass. Okay. Modus operandi of medicines is explained in aphorism. 28 and 29. 29 is right answer. Obstacle of cure and their removal. Name the aphorisms. Faster. Pass. Which part is used for making medicine Gelsemium? Faster. Root. Wrong. Pass. Bennett's who gave the idea of complete symptom. Wait. Team 9. Dr. Vonnegut. Right. I give you 10 marks. Anybody from our audience who can give the complete symptoms given by Vonnegut? All stages. Yes, Dr. Renuka. Causation, location, sensation. In the correct order. Bottle is little costly, man. Twist, squid, I know, but it is causation. Then is You are getting wrong. Anyone can answer in the correct order from the audience. Wait. location, sensation, modalities. No, I want that. Those quiz answers. That is written by me in my paper. Yes, ma'am. You can. Quiz, quid, ubi, quibus, auxilius, cumodo, cunado. You missed one.
One more chance. Quiz. Little louder. Quiz. Quid. Ubi. Cur. Quibus. Auxilis. Cumado. Cunado. That was little different from, but I still give you. Please come back. Seat of the disease. Cubis auxilis is the concomitant. Cure is the causation. Cumado is the team 2. Team 4. Right. Sorry, ma'am, visible है आपको? See, the judgment given by them are final. Okay, ready for the next? Saffron is the common name of medicine. Right, you got 10 marks for this. Next. Dr. Samuel Hahnemann introduced centesimal scale in the year? 7. Name the year. 20 seconds. 1829. Wrong, you get negative 5 marks. No one? None of the buzzers being 20 seconds wrong? Perfect. You got 10 marks. You have to press buzzer by 20 seconds even if no one is pressing. Right, ready for next? Medicine prepared from bed bug. Medicine prepared from bed bug. Wait, sir, it's still with the contestants' time. No one coming up with the buzzer. Question goes to audience. Divedi sir. Will not get the bottle, sir. Cymex. Perfect. Questions are a bit tough, or you are worrying for negative marks? That's then I am on the safer side. Okay, I'll ask the easy one to get the buzzers. Number of aphorisms in first edition of 7 again. Team 7. You're faster pressing the buzzer than discussing it. Sorry? Sorry? 272. Wrong. You got negative marks. Question goes to the audience. Number of aphorisms in first edition of organ. Yes? 259. Wrong. Student should not answer it wrongly. Dr. Sanjay? 250. Wrong, sir. Anyone from the contestant but not the gift? Anyone wants to answer? No marks, no gift. That's not the way. You want to come with answer? Wrong. What you said? Wrong. 59. 271. Ridhima got it right. Team 7. Reabsorption of? Wrong. You got the wrong. Reabsorption of water it is. Negative 5 marks. Okay, I am left with the 2 last questions. So all ready to concentrate? Ready with the buzzers? Most common site of ectopic pregnancy. Team 6. Most common site of ectopic pregnancy. Wrong, you get negative 5 marks for that. Question moves to the audience. Yeah, what you answered? Yeah, that was right. I was a little different written. Yeah. Thank you, Renika ma'am. It was tubal pregnancy. 10 marks for that. Right. Last.
surest sign of antemortem hanging is perfect. Right, you got 10 marks for that. So here we comes to the end of third round. Scorer to announce the score. Thank you. For the quiz contest particularly. हॉल थोड़ा बड़ा रखिएगा. I'll come to you one by one. Yes. Sir, please हॉल थोड़ा बड़ा रखिएगा. Very right. We have noticed that all will be bigger than any further suggestion regarding anything. लाल सिंह? वो अपना इंटेलेक्ट और अपना कैलिबर बाहर निकालें और अपना इंटरेस्ट रिसर्च की तरफ लेके जाएं. एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ये जो सब्जेक्ट्स है ना, हम लोग पास होने के लिए पढ़ते हैं, लेकिन क्लिनिकल में जाके हमें इनकी बहुत ज़रूरत पड़ती है. एक्शन ऑफ मेडिसिन अगर हमें पता ही नहीं है वो किस चीज़ से बन रही है, कैसे बन रही है, हम आगे जाके उसको क्या करेंगे. पर हमारा व्हाट आई एम फीलिंग इज, आजकल हमारा क्या काम हो गया है कि भी कहीं गए या जो एक ऐड आ गई ना सॉफ्टवेयर की, वो सॉफ्टवेयर खरीदा, क्लरिकल काम किया, सिम्टम्स मिले, दवाई दे दी. या जो पेटेंट वाले हमारे पास आ गए, उनके पेटेंट्स लिख दिए. या फिर क्या है, हम सेमिनार में गए, वहाँ डॉक्टर कोचर ने सपोज करो बता दिया मैंने कैंसर ठीक किया आर्सेनिक से. वो जो कैंसर का पेशेंट आएगा हम आर्सेनिक फिक्स कर देंगे, जुकाम चाहे हमसे ठीक ना हो. हमारा टारगेट ये है कि भी स्टूडेंट्स कम से कम एक ठीक डायरेक्शन में जाएं. अब जितने क्वेश्चंस थे जो टीचर्स हैं वो देख रहे होंगे, हनेमैन, बोनिंगहसन, ऑर्गेनॉन से थे. होम्योपैथी बनाई किसने? हनेमैन ने. हम कितनी बुक्स पढ़ते हैं हनेमैन की, हमें पता भी नहीं होगा उसकी बुक्स कितनी थी. फ्रेंड ऑफ हेल्थ किसी को नहीं पता. बोनिंगहसन, जिसको कि हनेमैन ने कहा था अगर मैं कभी बीमार पड़ जाऊं तो सिर्फ बोनिंगहसन पे भरोसा कर सकता हूं, उसको तो हमें पता ही नहीं है वो कौन है. और मैं आपको यहाँ एक ऐड करना चाहूँगा कि भी बोनिंगहसन थेराप्यूटिक पॉकेट बुक के जर्मन से 5 एडिशंस आ चुके हैं. हम पहले एडिशन में नहीं पढ़ते, और एक्सेल एकेडमी के पास वो 5 एडिशन है. और आपको मैं ये बताना चाहूँगा 5th एडिशन की ट्रांसलेशन हम लोगों ने कर ली है. अगर कोई कॉलेज के कोई स्टूडेंट्स चाहते हैं कि भी हम उनको ये बताएं, दे कैन कम टू अस. और हम कॉलेजेस को ये कहते हैं कि भी आप हमसे कहो कि भी थेरेप्यूटिक पॉकेट बुक, हम आपको उसकी फोटो कॉपीज देंगे, उनकी ट्रांसलेशंस देंगे, और आप देखोगे बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं जो प्रैक्टिस में काम आते हैं लेकिन और रेपर्टरीज में नहीं है. और दूसरी चीज़, एक और स्टूडेंट्स के लिए सोचने वाली चीज़ है, जितनी रेपर्टरीज आज आप देखोगे, मार्केट से कोई रेपर्टरी उठा लो, उसके रेफरेंसेस में देखना किसी भी इंडियन का नाम नहीं होता. चाहे वो सिंथेटिक रेपर्टरी है, चाहे मर्फी की रेपर्टरी है, चाहे कोई भी है. और सिर्फ वर्ल्ड में हिंदुस्तान ऐसा देश है जहाँ पे कॉलेजेस हैं, प्रॉपर एजुकेशन हो रही है. लेकिन यूरोपियंस को और बाहर के लोगों को हम लोगों पे भरोसा नहीं है, क्योंकि हमारी टीचिंग ऐसी है, हमारी फॉलोइंग है. मैं आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ. मैं एक सीनियर डॉक्टर के साथ विथुलपास की एकेडमी गया आज से 2 साल पहले. वहाँ पे वो ऐसी क्वेश्चन केसेस दिखाते हैं और क्वेश्चंस पूछते हैं, केस बताओ. वो सारे मैं कह लो जी अनक्योर्ड वो हैं जो ठीक नहीं हो सकते, उनके पेशेंट्स हैं. वो आएंगे, आप मेडिसिन बताओगे, डिस्कस करेंगे, ओके क्या दिया क्या नहीं दिया वो उनका मैटर है. उन सीनियर डॉक्टर ने एक किसी कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो इंडिया में चल रहे हैं एक मेडिसिन बताई किसी पेशेंट की. डॉक्टर विथुलकर सेज ये सिर्फ इंडिया में होता है जी सिस्टम. इंडिया के बाहर हम हनेमैन, बोनिंगहसन
इन्हीं को फॉलो करते हैं। वहां पे शायद सर जानते होंगे, साराभाई देसाई बॉम्बे के एक लीडिंग प्रैक्टिशनर थे पी शंकरम के टाइम पे, उनका बेटा भी वही था। उसने भी ऐसे ही एक क्वेश्चन का बताया इस पेशेंट को ये देंगे, तो विथुल का उसका आंसर उसको भी यही था। तो ये हम लोगों के लिए अच्छी बात है, पढ़ हम रहे हैं, क्वालिफिकेशंस हमारी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज करती है, लेकिन किसी रेपर्टरी में जो हम यूज कर रहे हैं किसी हिंदुस्तानी का नाम नहीं है कि भी उसकी ऑब्जर्वेशन ठीक थी। क्यों? क्योंकि हम लोग ही हैं जो हनेमैन और बोनिंग हसन को नहीं फॉलो कर रहे। हिंदुस्तान से बाहर जाओगे आपको सिर्फ यही दो चीजें दिखेंगी, या हनेमैन या बोनिंग हसन। इसीलिए हमारा कंसंट्रेट जो क्वेश्चंस का था वो इन्हीं के ऊपर था कि स्टूडेंट्स थोड़ा इंस्टिगेट होके इन लोगों को फॉलो करें। लिटरेचर बहुत है, जो जर्मन्स हैं वो जर्मन का लिटरेचर इंग्लिश में ट्रांसलेट नहीं करने देते। रीजन वो कहते हैं जो हनेमैन ने कर दिया, जो बोनिंग हसन ने कर दिया, इंग्लिश ट्रांसलेशन उसे खत्म कर देगी। दे पीपल थिंक कि कैंट ने होम्योपैथी को खत्म कर दिया, हम कैंट पढ़ते हैं। बहुत सारा लिटरेचर आज भी जर्मन में है जो बिना ट्रांसलेट किए पढ़ा है और खराब हो रहा है। या तो आप लोगों में से कोई आओ आगे, जर्मन सीखो, जर्मन जाओ, होम्योपैथ हो आप, होम्योपैथी के लिए इतना तो हम कर सकते हैं क्योंकि आप यंगस्टर्स हो, आपके पास अभी बहुत एवेन्यू है। मुझे कहोगे या डॉक्टर रेणुका को कहोगे, हमारी लाइफ तो निकल ली, अब 25 साल की प्रैक्टिस होगी, हमें कौन क्या सिखाएगा। हम उसी में खुश हैं जो हम कर रहे हैं। इन चीजों पे आप लोगों को सोचना पड़ेगा और आपको ही करना पड़ेगा। हमारा पर्पस सिर्फ यही है कि भाई आप लोग आगे आओ और कुछ करो। कल ऐसा ना हो 10 साल बाद हम अपने पूर्वों को गालियां निकालते हैं कि यार क्या कर दिया उन्होंने, कॉलेज खोल दिए, आधे कॉलेज बंद हो रहे हैं, सबको पता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कह रही है इसमें कंडीशंस पूरी नहीं है। 10 साल बाद लोग तुम्हें ना गालियां निकालें, तुम वो करो। एक करेगा, अपने आप लोग जुड़ते जाएंगे। तो यही हमारा पर्पस था और यही हम चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि कॉलेज में जाएंगे, ऑडियंस भी होंगे और टीचर्स होंगे, बच्चे होंगे, तो बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ तो सिर्फ गैदरिंग हमारी 100 की मुश्किल से, तो ये कॉलेज कोई भी, मैं अपने कॉलेज को ऑफर करता हूँ हमारे कॉलेज में करो। थोड़ा तुसी इधर ना सर, एक मिनट वेट करियो मैम, वेट करियो तुसी इधर। हाँ जी सर, नहीं बस ठीक सर, सामने देखियो सर, सामने देखो, सामने इस कैमरा पे। सर सामने, सर सामने, वेट करिए, वेट सर, सामने देखो, Now I request Dr. Dwivedi, Dr. Renuka, Dr. Neeru and Dr. Amita to give the team. Then Divya Chen from Lord. ठीक चल। सर रख लो। फिर सामने
Dr. Yamini Gupta of Lord Mahavira Homeopathic Medical College for securing third position. Dr. Riya Kathuria of Shri Guru Nanak Dev Homeopathic Medical College. College. Dr. Manav Verma of Shri Guru Nanak Dev Homeopathic Medical College and Hospital. Dr. Akshit Sharma of Shri Guru Nanak Dev Homeopathic Medical College and Hospital. Dr. Anju from JR Kisan Homeopathic Medical College, Rohtak. Dr. Anju, please. Dr. Archit Gupta of JR Kisan Homeopathic Medical College and Hospital, Rohtak. Dr. Bhavna of JR Kisan Homeopathic Medical College and Hospital, Rohtak. Dr. Shweta Singh from the same college, please. Dr. Saurabh Sharma of JR Kisan Homeopathic Medical College and Hospital. Dr. Gurmeet from the same college, Rohtak. Dr. Vanshika Singla of Homeopathic Medical College and Hospital, Chandigarh. Dr. Harshdeep Kaur from Chandigarh College. Dr. Shivani from Chandigarh College. Dr. Shweta Goyal from Chandigarh College. Dr. Parth from Chandigarh College. Dr. Chirag Tamar. Dr. Chirag.